Well, okay. I hope you are able to see the word file as well as you are able to see me. मैं आपको दिख रहा होगा. लास्ट क्लास तक हमने दो टॉपिक पढ़े हैं कि इस पेपर में इंडिया अंडर द कंपनी रूल. उसमें हमने सबसे शुरू में ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति यहाँ पर थी 18वीं सदी के मध्य में. और उसके बाद में फिर हमने देखा था दो युद्धों के बारे में हमने पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, विच आर कंसिडर एज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. उसके बाद में ऑब्वियसली उनका कॉन्फ्लिक्ट जो होना था वो मराठों के साथ में होना था, क्योंकि ब्रिटिशों ने जब यहाँ पर अपने एक्सपेंशन की पॉलिसी शुरू की, उस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर, इंडियन पावर अगर कौन सी थी तो वो थी मराठों की. So they were always looking for an opportunity to intervene in the Maratha administration. मराठा के राज्य में उनका प्रवेश हो, इसके हमेशा वो कोशिश करते थे. और मराठोस की वीकनेस थी कि वो मिलिट्री जरूर स्ट्रांग थे, लेकिन they were always divided among themselves. जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसका होल्ड, उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं था. सो इट वाज अ काइंड ऑफ कॉन्फेडरेशन, नॉट अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जैसे कि मुगलों ने यहाँ पर दिया था. And it had that inherent weakness. उसमें वो शुरू से ही since inception, after the period of शिवाजी, after the period of संभाजी, राजा राम के समय से ही आ रहा था कि जागीरदारी सिस्टम चली आ रही थी और उसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं. पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में, उसमें मराठे हार गए थे और उसका एडवांटेज ब्रिटिशों ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए लिया. बंगाल और बिहार, उस एरिया में हम लोग देखते हैं कि 1761 में मराठे हार गए और उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जिसमें कि अवध का नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों को ब्रिटिशों ने हराया था. और ये शायद संभव नहीं हो पाता अगर मराठे स्ट्रांग रहते और मराठे भी उस समय अगर उसमें ज्वाइन हो जाते ब्रिटिशों के खिलाफ. लेकिन कॉम्प्लिकेशंस काफी थे एंड ब्रिटिशर्स वेर वेरी क्लेवर टू एक्सप्लॉइट द कॉम्प्लिकेशन टू देयर ओन एडवांटेज. अभी क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशन थी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आया, ये 1775 टू 82, ये काफी लंबे समय तक चला, 7 साल तक ये लड़ाई करीब करीब चलती रही. एंड इट हैव डिफरेंट फेजेस. ऑब्वियस रीजन तो यही था कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड देयर एम्पायर एंड ऑब्वियसली द कॉन्फ्लिक्ट वाज इनएविटेबल. नाउ in 1772, one important event has happened, that is Peshwa Madhavrao dies. You know, Peshwa Madhavrao becomes Peshwa in 1761 after the third battle of Panipat, and though he was very young, काफी कम उम्र में वो पेशवा बने थे, but he was very capable and he managed to control the Maratha empire. और उसी समय वॉरेन हेस्टिंग इंडिया में आए एज ए गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हु वाज नोन एज एन इंपेरियलिस्टिक पर्सन. 1772 के बाद में 1772 में जब माधवराव की मृत्यु हुई तो उसके छोटे भाई नारायण राव, उसको पेशवा बना दिया गया. बट नारायण राव वाज नॉट वेरी केपेबल पर्सन. उसके जो चाचा थे, जो अंकल थे राव, कि अभी माधवराव की मृत्यु हो जाना चाहिए, लेकिन नारायण राव को बनाया गया. तो यू नो दिस रघुनाथ राव, he started indulging in conspiracies. He has indulged into conspiracy during that period of Peshwa Madhavrao as well. माधवराव के समय भी उन्होंने कई षड्यंत्र किए थे, लेकिन माधवराव was capable and he had support of the people. Narayan Rao did not understood, he was young and inexperienced, and he did not understood that मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा conspiracy होगी. और एक कॉन्स्पिरेसी में, विच इज अ वेरी रेयर एग्जांपल इन मराठा हिस्ट्री, रघुनाथ राव गॉट नारायण राव मर्डर. अभी उसमें रघुनाथ राव का हाथ कितना था कितना नहीं था ये सब कुछ थोड़ा अनिश्चित है अभी भी, बट नारायण राव वाज मर्डर. रघुनाथ राव ने जो जो गार्दी होते थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, उनको आदेश दिया था कि नारायण राव को पकड़ो, और उसी में शायद चेंज कर दिया गया एंड नारायण राव वाज किल्ड ड्यूरिंग दैट एपिसोड. तो ये एक बहुत शॉकिंग घटना थी, which had shocked the sensibility of the Marathas. मराठा नोबल जो थे उनको काफी शॉक लगा इन बातों से. उसके बाद में अभी पेशवा के घराने में और कोई पुरुष था नहीं, केवल रघुनाथ राव ही था. तो रघुनाथ राव को पेशवा बना दिया गया. पेशवा जो छत्रपति होते थे सातारा में, वो बनाते थे. लेकिन रघुनाथ राव को पेशवा जरूर बना दिया गया, but there were number of people who did not like this Raghunath Rao. They thought that he is a murderer and murderer should not be the head of the Maratha state. वो पेशवा नहीं हो सकता.
तो उसके खिलाफ रघुनाथ राव के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी बनने लगी। लोग मराठा नोबल जो थे वो इकट्ठा आने लगे, और इसी को कहा जाता है बारभाईचे कारस्थान। कारस्थान मीन्स षड्यंत्र, बारभाई मीन्स 12 ब्रदर. So it is like 12 brothers coming together and having a conspiracy to remove Raghunath Rao from the Peshwa side. But then who will be made Peshwa? Narayan Rao, when he was murdered, his wife was in a family way. She was an expectant mother. तो ये निश्चित किया गया कि उसको जो लड़का होगा उसको हम लोग पेशवा बनाएंगे। और अभी एज दे हैव इंडल्ज इनटू द कॉन्स्पिरेसी, दे वर लुकिंग फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो 12 भाई के जो कारस्तान है, इसमें जो 12 इंपॉर्टेंट पीपल थे, कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें नाना फडणवीस एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो कि काफी लंबे समय से पेशवा के यहाँ पर नौकरी करता था। ही यूज्ड टू राइट एन अकाउंट, बट देन ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देयर वाज अ सखाराम बापू, इंडिया, बाबूजी नायक, मालोजी घोरपडे, Bhavanrao Pratinidhi, Raste, Patwardhan, Tukoji Holkar. So all these people, they join hands together against Raghunath Rao, whom they consider as a murderer of his own nephew. Ab Raghunath Rao, he could not obviously stay at Pune always. He has to go on war, and once he goes for a war, and in Pune these people, they hatch conspiracy. उसी समय वहाँ जो पेशवा के जो न्यायाधीश थे राम शास्त्री प्रभु ने, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि इट इज रघुनाथ राव हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ हिज ओन nephew. And so the opinion of the people, it turned against Raghunath Rao, and they started supporting this Barbhai, this 12 conspirator. Now they took adequate precaution that no harm will come to the wife of Narayan Rao. She is, kept safely at the fort of Purandar, and they organized their army, and they sent that army against Raghunath Rao. Now Raghunath Rao realized that as I am out from Pune, these people have joined and they also form an army and send their army against me. So he also took certain step for his protection, and the war was fought at between Raghunath Rao on the one side and the army sent by this Barbhai, the 12 people against him. And though Raghunath Rao had some initial victory, finally he was defeated at number of places. The very brave Senapati that was appointed by this Barbhai was Haripant Phadke. And Raghunath Rao has to run from one place to another place. From Maharashtra, he goes to north, he goes to Sindhia, he goes to Holkar, he goes to Baroda, but then he was persuaded by this Haripanta Phadke, and finally, Raghunath Rao, an attempt was made that there should be an agreement between this Barbhai and Raghunath Rao, but Raghunath Rao himself was quite fickle-minded, and he was not willing to trust these Barbhai people. He thought that if I surrender to them or if I go to their hand, probably I'll be arrested and put in the jail, and they will, have a case against me for murdering my own nephew. So what he does is he goes to British. Many people try to dissuade him from that. कई लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि don't take help of the Britishers, they are very cunning people. But he doesn't listen, and he goes, he runs away. He goes to the Britishers, and Britishers take him to Surat, and at Surat he signs an agreement with the Britishers in 1775, and this is known as Treaty of Surat. इसको सूरत की संधि कहा जाता है, जो कि रघुनाथ राव और ब्रिटिशों के बीच में हुई थी। और इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव ये मान गया कि थाने, साष्टी, वसई, जमुरा एंड ऑल पोर्ट एरिया नियर सूरत ये ब्रिटिशों को दिया जाएगा, और उसके बदले में रघुनाथ राव को ब्रिटिश पेशवा बनाएंगे। एंड उसके बाद में जब ये एग्रीमेंट हुआ, तो अलॉन्ग विथ रघुनाथ राव, द ब्रिटिशर्स अलॉन्ग विथ देयर आर्मी, दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स पुणे। एंड ये जो बारभाई की आर्मी थी, दे आल्सो स्टार्टेड मार्चिंग, एंड दिस both the armies they met at place called अडस। अडस की लड़ाई हुई 1775 में, और यहाँ पर डिसीजिव विक्ट्री किसी को भी नहीं मिली, ब्रिटिश को भी कोई सक्सेस नहीं मिली, एंड नाइदर दे वर डिसीजिवली डिफीटेड बाय द मराठास। लेकिन उसके साथ में सिचुएशन ऐसी हो गई थी मराठा एम्पायर में कि उनको लगा कि अभी निगोशिएशन करके लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है, एंड दे ओपन निगोशिएशन। ब्रिटिशों ने मराठों के सामने मांग रखी कि जो 50 लाख हम लोग अभी तक खर्च कर चुके इस लड़ाई में और रघुनाथ राव के ऊपर, वो 50 लाख हमें वापस दे दिया जाए। ऑफकोर्स ये मराठों को स्वीकृत नहीं था, लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या मराठों के सामने आ गई। पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में
भाऊ साहब पेशवा गुम हो गए थे, मतलब अनिश्चित है। वो कोई कहते हैं, कोई हिस्टोरियन कहते हैं उनकी डेड बॉडी मिली थी, कोई कहते हैं नहीं मिली थी, लेकिन उस समय तक निश्चित नहीं था कि निश्चित में उनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। उनकी पत्नी जो थी पार्वती बाई, जो कि पानीपत से वापस आई थी, अगर आपने वो मूवी भी देखी होगी पानीपत, तो जो कि पानीपत से वापस आ गई थी, वो भी इस विश्वास करती थी कि भाऊ साहब अभी जिंदा है, और वो जैसे हिंदू स्त्रियों में सुहागन होती है ना, वो सुहागन की तरह रहती थी। विधवाओं का कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, रहने का तरीका, जैसे वो बिंदी नहीं लगाती है, लेकिन जो सुहागन होती है जिसका पति जीवित होता है वो बिंदी लगाती है, तो उसी तरीके से रहती थी। तो एक आदमी उस समय आया उत्तर भारत से, और उसने कहा कि मैं भाऊ साहब हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, और उसके कारण बड़ी समस्या आ गई। अब वो भाऊ साहब की तरह दिखता भी था, उन्हीं की तरह बोलता भी था, तो कई लोगों को लगता था कि ये सही है, कुछ लोगों को लगता था कि नहीं ये गलत व्यक्ति है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसके कारण अगर ये सही है और उसको अगर हम नहीं स्वीकृत करते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग उसके साथ में हो जाए। पहले ही मराठा एम्पायर एक लड़ाई में बिजी थी रघुनाथ राव के विरुद्ध और ब्रिटिशों के विरुद्ध, और ये नई समस्या आ जाएगी, दिस विल बी न्यू प्रॉब्लम टू डील विद। एंड दिस बारभाई थॉट दैट द पुणे दरबार, आई कॉल देम इन शॉर्ट, this Pune Darbar thought that it is better that we should have an agreement with Britishers, so that we can deal with this problem separately. And finally, negotiations started between the Britishers and the Pune Darbar, and they reached to an agreement. And that treaty, which is signed between Pune Darbar and the Britishers, is known as Treaty of Purandar, which was signed in 1776. So the war started 1775. Within a year, as there was no decisive victory of the neither side, they came to an agreement because they both had certain problems. क्योंकि ब्रिटिशों को भी अपने तरीके से ये लगता था कि अगर हम मराठों के खिलाफ और लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हो सकता है मराठे फ्रेंच की मदद ले, और ये एग्रीमेंट दोनों पार्टी तैयार हो गई। शास्त्री अलॉन्ग विद द फोर्ट ऑफ ठाणे विल रिमेन विद ब्रिटिश, एक एग्रीमेंट था, ठाणे का किला और शास्त्री का एरिया ब्रिटिशों के पास में रहेगा। ब्रिटिशों का ये रघुनाथ राव के समर्थन में जो खर्च हो गया वो उसको निगोशिएट किया गया, और लास्ट में मराठा दे एग्रीड टू पे 12 लाख रुपीज। और ये भी कहा गया कि रघुनाथ राव जो है ही विल रिटायर फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स एंड ही विल बी पेड पेंशन बाय पुणे दरबार। ये एग्रीमेंट तो हो गया, बट nobody was satisfied with this that agreement. Both the parties, they just agreed to this term to buy some time, कुछ समस्या जो सामने थी उसको खत्म हो जाए, उसके लिए ये टेम्पररी एग्रीमेंट था। ब्रिटिशर्स वर नॉट satisfied. Neither Raghunath Rao retired from politics. He continued to be in politics and continued to indulge in conspiracies. और उसमें फ्रेंच एम्बेसडर भी पुणे में आ गया 1778 में, and this has angered Britishers. Britishers now thought that probably Marathas are going to form an united front with the French against us. और उसके बाद में they again organized the army, and then they started marching towards Pune along with Raghunath Rao. And but the Pune Darbar army of this Barbhai, they marched, and at Talegaon, the battle was fought at a place called Talegaon in 1779. And in that battle of Talegaon, the Britishers were decisively defeated and they finally surrendered. And after this battle, successful battle, Marathas who won the battle, an agreement was signed between Britishers and the Pune Darbar, which is known as Vadgaon Chatah, the Treaty of Vadgaon. And in that Vadgaon agreement, the Treaty of Vadgaon, the clauses were there that Raghunath Rao will be handed over to the Marathas, and Shasti, Vasai, and area of Gujarat that were captured by the British from the Marathas will be handed over back to the Marathas. So the Marathas definitely had an upper hand as they owned this war. Now this agreement was signed by the Britishers at Mumbai, the Britishers at Bombay, because it was the Britishers at Bombay who, along with their army, going towards Pune along with Raghuva Dada. But Warren Hastings, who came as Governor General, he did not approve of this agreement, and the war between Marathas and the Pune Darbar, it started once again. Now there were a number of rulers who also joined the Marathas in this war. Now it was a diplomacy of Nana Fadnavis, who was considered as a very wise person in the Maratha Empire. He Pune, Nagpurkar Bhosle, Nizam of Hyderabad, Mysore, Hyder Ali of Mysore was a very
डाई हार्ड एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसके साथ में भी मराठों ने अपना अलायंस कर लिया, एंड ऑल दिस पीपल दे प्लान टू हैव एन ऑल आउट अटैक ऑन द ब्रिटिशर्स. Somehow Warren Hastings was a very good diplomat. The British diplomacy, they were very clever, and he started negotiation with the Bhoslas of Nagpur as well as the Nizam of Hyderabad, and he somehow managed to win these people away from this alliance. The Bhosla, he remained neutral, and the Nizam also, he did not join the war. But Hyderabad, Hyder Ali, the ruler of Mysore, he fought an all-out war against the Britishers. He had a much better organized army, and even he went very very close to Madras. The Britishers, they also could not win against the Marathas at Pune, but in the north, the Britishers, they were fighting on the different front. Army in the southern part fighting against Hyder Ali, army in Maharashtra fighting against Pune Darbar, and there was an army in the north who were fighting against the Sindhyas at Gwalior, because Sindhyas, though Maratha Sardar, his main base was northern India, that is Gwalior, even Delhi and Agra, all that was controlled by Sindhya. So in the north, this Maratha army, the British army, they fought against India, and Sindhya were defeated. And now, as this war was going on in the different front, East India Company also came under the severe financial strain, and they were in a mood to withdraw from war. And now Hastings, as he was a very clear diplomat, he thought that as Mahadaji Sindhya, who was defeated by the Britishers, is one of the important, very influential general of the Marathas, and as he is defeated, he will be under obligation. So it's better to open the negotiation through Mahadaji Sindhya, and Mahadaji Sindhya, he took an initiative, and treaty was signed between the Marathas and Pune Darbar, which is known as Treaty of Salbai, which was signed in 1782. Now, in this treaty, Mahadaji Sindhya, he thought about his own interest and prestige only, because though these Barbhai, they came together, they had internal clashes. For example, Nana Fadnavis was becoming very important in the Maratha Empire, and it was not liked by many Maratha Sardar, including Mahadaji Sindhya. And he thought that before the prestige and the power of Nana Fadnavis increases too much, let us clip his wings. So that kind of internal conflict within the Maratha Confederation had proved very fatal during the latter phase. उसके कारण मराठों का काफी नुकसान हो गया. And ये जो ट्रीटी ऑफ सालबाई थी, उसमें क्या क्या क्लॉजेस थे मैं आपको बताता हूँ. All the Maratha areas that were conquered by the British after the Treaty of Purandar will be handed over to the Marathas. Shastian Island near Mumbai and Bharuch will remain with British. British will not support Raghunath Rao anymore. Raghunath Rao will be given a pension of 25,000 rupees by Peshwas, that means by Pune Darbar. And here one clause was added, which was a great diplomatic victory for Hastings. That is, it said that all the British area that was conquered by Hyder in the South India will be handed over to the Britishers back, and the Marathas will ensure that this is done. Now, Hyder Ali, in cooperation with Marathas, fought against Britishers. He captured certain area. Now, just imagine that area to be handed over to the Britishers, and the Maratha takes the responsibility. So, among whom the conflict will start now? From the Marathas and Hyder Ali. So, as this agreement was signed with the initiative of Mahadaji Sindhyas, this clause was not liked by Nana Fadnavis, and he did not really sign it till the time of the death of Hyder Ali. But he was helpless. Though Nana Fadnavis was a great diplomat, great administrator, but for military power, he has to remain dependent on Mahadaji Sindhya. Mahadaji Sindhya has a well-trained and better organized army among all the Maratha Sardar. So he could not antagonize Mahadaji Sindhya. So that kind of conflict was there. And another important clause was that the Peshwa will not have relation with any other European power other than the British. So it was like curtailing the freedom of the Marathas. So though the first Anglo-Maratha war was not very decisive, Britishers could not win the victory, but they definitely had a diplomatically upper hand because they could defeat Mahadaji Sindhya in the northern part of India. And it was Mahadaji Sindhya who was made responsible to ensure that this treaty is implemented. Nana Fadnavis, as he did not like this, but Maratha could not go against Mahadaji Sindhya. And Nana Fadnavis did not sign the treaty initially, and it was only after the death of Hyder that he signed the treaty. And it was quite insulting for Pune Darbar, and Mahadaji Sindhya thought only about his benefit. It was a quite diplomatic history for Hastings.
Now this war, the first Anglo-Maratha war, ended in uh, 1782. Now let us go to the second Anglo-Maratha War. But before that, little bit of discussion about the what important events took place between 1782 to 1803 when this war actually started. The situation in Maratha Empire between these 2 years, 82 to 1803, almost 20 years. It has deteriorated further because Savai Madhavrao, son of Narayan Rao, who was murdered by Raghunath Rao, now he became Peshwa. He was very young, child, and he was all the power was now concentrated in the hands of Nana Fadnavis. And people were of course quite jealous of Nana Fadnavis, and the Sardar like Scindia and Holkar, they did not like the growing power of Nana, and Nana also did not try to reduce the enmity between these two important Sardar of the north, that is Scindia and Holkar, because they thought that if they are fighting, their influence in the Maratha empire will also be less. So it is the internal contradiction in internal conflict that has kept the Maratha weak. And but then Nana Fadnavis, though he was quite wise, he unfortunately dies in 1800, and it is said that it is one of the sentence of one of the British resident at Pune that with the death of Nana, all the wisdom in Maratha Empire has gone away. नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद में मराठा एम्पायर का ऑल द विजडम जो है वो नष्ट हो गया. ही वाज वेरी वाइज इन स्पाइट ऑफ सर्टेन डिफेक्ट्स. वेल, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मराठों का जो डिक्लाइन है वो काफी और रैपिड हो गया और स्विफ्टली हो गया. सवाई माधवराव जो है उनकी भी मृत्यु हो गई. और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मराठास इट हैड इंटेंसिफाइड फर्दर, क्योंकि उसके बाद में जो पेशवा बना बाजीराव टू, he was son of Raghunath Rao, and he was not very capable person. Though as a head of the Maratha confederation, he did not enjoy a lot of respect. He had no capacity, no quality to control the people, and unfortunately he surrounded himself with a very incapable person. Like he did not had a very capable person to guide him anymore after 1800, like Nana Fadnavis used to be good guidance, but he surrounded himself with those people who flattered him and who indulged into conspiracy. But now, though he was losing control over all his Maratha Sardar, nobody was listening to him. But Bajirao was at least had was wise enough to understand that the Britishers are the main enemy of the Maratha Empire. And now taking advantage of the very precarious situation, Maratha Empire की जो condition खराब हो रही थी, Britishers उसका advantage लेना चाहते थे और उन्होंने क्या किया? They tried to pressurize Bajirao too in signing the subsidiary alliance. What is subsidiary alliance that we will discuss later on. लेकिन in short उसका मतलब ये होता है कि British they take the responsibility of the protection of the Indian ruler, and in return of that army which is kept for the protection of the Indian ruler, the ruler has to either pay them or they have to give certain area for from where that revenue will be collected and the expenditure of that army is made. Subsidiary alliance का मतलब ये होता था कि ब्रिटिश उस भारतीय शासक के संरक्षण की जिम्मेदारी लेते थे और उसके बदले में एक सेना उसके राज्य में रखी जाती थी, और उस सेना का खर्च वो राजा को चलाना होता था. अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो कुछ एरिया उस सेना के खर्च के लिए दे देना पड़ता था. तो ये सब्सिडरी अलायंस के कारण क्या होता था, राजा दुर्बल हो जाता था, उसके पास में अपनी फौज बहुत कम रह जाती थी और ब्रिटिशों के ऊपर वो पूरा निर्भर हो जाता था. ही यूज्ड टू बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी प्रेशराइज करने की कोशिश की बाजीराव टू को कि आप भी सब्सिडारी अलायंस ले लीजिए, बट बाजीराव ही अंडरस्टूड दैट ब्रिटिशर्स आर हिज रियल एनिमी ऑफ द मराठास and he did not accept that subsidiary alliance for a very long time. But nevertheless, Britishers they kept on looking for an opportunity. They used to have communication with all the Maratha Sardar along with Peshwa, keep on sending the wakil and having indicating that our doors are open, हमारे रास्ते खुले हैं कि आप कभी भी आइए हमारी मदद लीजिए. Because that is what they wanted, to have entry into the Maratha Empire so that gradually they can encroach on the Maratha territory and finally extinct कर दे, मराठा एम्पायर को समाप्त कर दे. ये उनका बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग था. अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये जो आपस के झगड़े जो थे मराठों के,
that has given them opportunity for the Britishers to enter into the Maratha Empire. अभी उसमें क्या घटनाक्रम हुआ और किसके कारण जो द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया 1803 में, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया कि मराठों का कैसे रिटोरेशन होने लगा था, आपस में लड़ाइयाँ होने लगी थी, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई 1800 में, और उसके बाद में बाजीराव सेकंड जो पेशवा था, ही हैज नो कंट्रोल ओवर द मराठा सरदार, एंड मराठा सरदार के आपस के जो झगड़े थे, आपस की जो लड़ाइयाँ थी, वो ज्यादा बढ़ने लगी थी। एक ये जो मराठा सरदार आपस में जो लड़ते थे, उनमें से बहुत क्या कहते हैं, बहुत खानदानी दुश्मनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कई सालों से, कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो दुश्मनी थी सिंधेज और होलकर के बीच में। सिंधिया ग्वालियर में उनका स्टेशन था और होलकर का स्टेशन था इंदौर। तो ये दोनों भी उत्तर भारत में इन्होंने काफी काम किया था मराठा एम्पायर को बढ़ाने में, लेकिन आपस में इनका संघर्ष बहुत पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चला चला आ रहा था। तो इस संघर्ष में पेशवा ने इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करने के बजाय, what Bajirao Peshwa has done is, Bajirao second, I mean, abhi now onwards I will call him Bajirao Peshwa only. Please remember that he is Bajirao second that I am referring to now. Bajirao first का पीरियड बहुत पहले खत्म हो गया था, 1722 1740 में उसका पीरियड था। Now we are in 1803, 1802-03। अभी ये जो संघर्ष था होलकर और सिंधिया फैमिली का, इसको सुलह करने के बजाय बाजीराव पेशवा जो है, ही स्टार्टेड साइडिंग विद सिंधियाज। उस समय सिंधिया के जो प्रमुख थे दौलत राव सिंधिया, उनसे उनकी अच्छी बनती थी, एंड दौलत राव सिंधिया के साथ में मिलकर he did not give justice to Holkar. Holkar has appealed to him, resolve the problem, give justice to us, लेकिन उसके तरफ बाजीराव पेशवा ने कोई कोई ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण क्या हो गया, इन एक लड़ाई शुरू हो गई, पेशवा और सिंधिया एक तरफ और होलकर एक तरफ। होलकर जो यशवंतराव होलकर जो थे, उनके भाई थे विठोजी होलकर। तो एक लड़ाई में विठोजी होलकर हार जाते हैं। विठोजी होलकर वाज कैप्चर्ड, उनको पकड़ा गया, पुणे में ले जाया गया, एंड देयर ही वाज किल्ड बाय ट्रैम्पलिंग बाय द एलिफेंट। हाथी के पैर के नीचे कुचलकर उसको मार डाला गया। और जब उसको मारा गया था, तो बाजीराव पेशवा अपने कुछ लोगों के साथ में गैलरी में खड़ा रहकर ये तमाशा देख रहा था। Now this was a very cruel act on the part of Peshwa, and when this news reached Yashwantrao Holkar, he was very angry, and he resolved कि I have no intention to harm Peshwa, but Peshwa should resolve our differences, otherwise I am left with no option but to attack. And he moved around, काफी उत्तर भारत में वो घुमा और काफी उसने सेना जमा की, और कई लोगों ने फिर उसका साथ भी दिया। People had their own grievances and they thought that यशवंतराव होलकर is justified, यशवंतराव होलकर ये काफी justified उसका काम है। And then he comes with a huge army, he comes towards Pune, और पुणे के पास में वो फिर भी वो he sends on request letter that I have no intention to harm Peshwa, you are the head of the Maratha confederation, so you should resolve the differences between Scindia and me. But Bajirao Peshwa did not paid much heed, and finally the war was fought between Holkar on the one side and Bajirao and Scindia on the other side. And in that war, Holkar fought very valiantly, and Peshwas and Scindia's combined army was defeated at a place called Hadapasar near Pune in 1802. Now, as Peshwa was looking from a distance that his army is being defeated, this person ran away. He had now later on also we will see that he have a history of running away from the battlefield. So he runs away from battlefield. He takes shelter first at Purandar, then goes to different places, and after 5-6 months, he ran away and took shelter with the Britishers at a place called Vasai in Marathi, which is pronounced at Basin by the Britishers. So Vasai and Basin are the same thing. Now, as Peshwa Bajirao ran away, he had his brother Amrut Rao. This Bajirao was the biological son of Raghunath Rao, but before his birth, Raghunath Rao has adopted a child who was Amrut Rao. So his Amrut Rao was brought, and Holkar declared that Amrut Rao is Peshwa now. But Amrut Rao refused to become Peshwa. On the other hand, he said, "He'll make my son as Peshwa." And on the name of his son, he started, acting as on the behalf of his son, he started acting as Peshwa. Well, now all the Maratha Sardar, they not all, but many of them in Pune, they came together
and they started supporting this Amrutrao because they appeal and they repeatedly send their letters and their messenger to Bajirao Peshwa not to sign any treaty with the Britishers. These Britishers are very dangerous people. But you know, Bajirao he lacked the foresight. दूरदृष्टि का उसमें अभाव था. उसने कुछ समय तक तो अवॉइड किया, कुछ समय तक समझ लिया, बट ही वाज नॉट हैविंग अ डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग की उसमें कैपेसिटी नहीं थी. एंड इन स्पाइट ऑफ द एडवाइस गिवन बाय होलकर, सिंधिया एंड नागपुरकर भोसले, he kept remaining with the Britishers, and Britishers they finally, they were negotiating. You signed the treaty with him. Bajirao was avoiding, and finally Britishers pressurizing. They threatened him ki if you don't sign, we will support Amrutrao as a Peshwa. And the British support was very valuable because it was one of the important growing military power in India. Now this has frightened Bajirao, and he finally signed the Treaty of Basin on 31st December 1802, the last day of the year 1802. And this is considered as one of the darkest day in the Maratha history, because he now virtually signed away the independence of the Maratha Empire. And what were the terms in this treaty? We will talk now. So let me just quickly repeat the sequences that led to this situation. That is, the enmity between Holkar and Scindia intensified. In this conflict, Peshwa Bajirao he sided with Scindias. This has angered Holkar, and there were war between Holkar and Scindia. Holkar on the one side and Scindia and Bajirao on the other side. Bajirao, unfortunately, he mercilessly killed Vithoji Holkar, brother of Yashwantrao Holkar, and Yashwantrao Holkar, angered, he comes on Pune with a huge army. He tries to negotiate. Bajirao did not entertain him, and finally the war was fought. The battle was fought, Battle of Hadpasar, in which Holkar defeated the combined army of Peshwa and Scindia. Peshwa runs away. In spite of the repeated request of the Maratha noble, he joined hands with the Britishers. Britishers finally pressurized him to sign the Treaty of Basin. And what were the agreement signed in this Treaty of Basin? We will study now. Well, Peshwa will keep the army of 6,000 infantry along with accompanying artillery in his kingdom. So, this is a kind of subsidiary alliances. An army will be, British army will be kept for the protection of Peshwa. And in return of that, the Peshwa will give an area that will bring yearly income of 26 lakh rupees to the Britishers for the expenditure of the army. No tax will be imposed on the goods by the army, the British goods, and move through the Peshwa territory. There will be no tax. Peshwa kept any unit with the Britishers. Peshwa had certain conflict with Gaikwad. About the conflict with Gaikwad, we'll refer to it later on. But all those conflicts will be resolved through the arbitration of the Britishers. Peshwa will not maintain any relationship with any foreign power without the consent of the British, and the British resident will be permanently stationed with the Peshwa and protect him. So now during the first Anglo-Maratha War, they did not had a very decisive victory. But during the second Anglo-Maratha War, the situation was quite ripe for the Britishers. They, in fact, before negotiation and before all this, they were very, very well prepared to fight against the Marathas. The army was well trained, well organized, and well recruited in northern, in Pune, as well as in southern part of India. And with all this preparation, the Britishers started from Basin towards Pune with Bajirao, with the intention to reinstall the Peshwa on the गादी, reinstall Bajirao on the गादी of Peshwa. उन्होंने अपनी सेना के साथ में बाजीराव को साथ में लेकर वो पुणे की तरफ आना उन्होंने शुरू किया, और साथ में उन्होंने लेटर्स भी लिखे मराठा सरदारों को कि बाजीराव आपका पेशवा है, वी हैव नो इंटेंशन टू हार्म हिम, कोई उसको हार्म नहीं करेगा, एंड नोबडी विल अपोज आवर आर्मी व्हिच इज कमिंग इन सपोर्ट ऑफ बाजीराव. तो उसके कारण भी क्या हो गया, जो होलकर और मराठा सरदार जो थे पुणे में, जो अभी अमृतराव को सपोर्ट कर रहे थे, उनमें भी डिवीजन हो गया. Some people they started thinking कि okay, Britishers are doing right, Bajirao is a rightful पेशवा. Now अमृतराव की कंडीशन बड़ी खराब हो गई. होलकर जो थे, जिन्होंने लड़ाई तो जीती थी, बट ही हैड नो मनी, सो ही आस्क्ड अमृतराव फॉर मनी. अमृतराव वो पैसा कहाँ से देगा, he was not in a position to give money. On the other hand, पेशवा
के तरफ से उसको जो करीब करीब 8 लाख रुपीस की पेंशन मिलती थी वो पेशवा ने बंद कर दी। तो फाइनली ब्रिटिशर्स दे आल्सो कम्युनिकेटेड विद अमृत राव एंड दे सेड कि ओके यू लीव दोस ऑल दोस पीपल हु फॉट अगेंस्ट देयर ओन पेशवास, you join hands with us and we ensure that we are getting pension. So Amrut Rao joins hands with Britishers. Now होलकर की कंडीशन और खराब हो गई। उसने पुणे से कुछ पैसा जमा करने की कोशिश की। ही सेंट हिज आर्मी। उसने उस आर्मी ने लोगों के ऊपर काफी जुल्म जबरदस्ती की एंड बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर दिया। बहुत सारा नहीं, but he did collect some money, but that money was not enough. That money was not adequate to fight a long drawn war against the British army, which was really hooked. And Holkar was left with no option but to withdraw from Pune. होलकर ने वहां पर कोशिश बड़ी की थी कि सिंधिया और भोसले सब एक साथ आए, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ऑल दिस पीपल। नाउ बाजीराव वाज रीइंस्टॉल्ड एज पेशवा इन पुणे। और मराठा, ये बाकी के जो मराठा सरदार थे उनको भी ब्रिटिशों ने अभी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि एज बाजीराव हैज एक्सेप्टेड सब्सिडारी आर्मी, ही इज हैविंग 6000 इन्फेंट्री एट पुणे टू प्रोटेक्ट हिम, you also accept this kind of subsidiary army. We will keep army in your kingdom, and that army will be used for your own protection from the internal revolt as well as from the external aggression. Maratha Sardar, they were not willing to accept the subsidiary army, and they were not also willing to accept that treaty of Basin. They knew that this treaty of Basin is very harmful for the Maratha empire, because by signing the treaty of Basin, Peshwa Bajirao has signed away the freedom of the Marathas. And they again try to the attempt of making a unified front against the Britishers was on. ब्रिटिशों के खिलाफ एक इकट्ठा आने की कोशिश मराठों की शुरू थी, लेकिन उस समय ब्रिटिशों ने एक ट्रिक, दे प्लेड अ ट्रिक। सिंधिया और होलकर की दुश्मनी थी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दौलत राव सिंधिया ने एक लेटर लिखा था पेशवा को, और उसमें यह लिखा था कि अभी टेम्पररी हम लोग होलकर के साथ में हाथ मिला लेते हैं और उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका क्या करना है। एक हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि पेशवा बाजीराव ने ट्रीटी जरूर साइन कर ली थी, लेकिन ट्रीटी उसने जबरदस्ती साइन उसको करनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। बट एट द सेम टाइम he was communicating with the different Maratha Sardar and asking them to organize and unite against the Britishers. तो लेकिन ये जो लेटर था सिंधिया का, जो पेशवा को लिखा था, लॉर्ड वेलेस्ली हैज इंश्योर्ड दैट दिस लेटर इज फॉलिंग इन द हैंड्स ऑफ यशवंतराव होलकर। ये लेटर यशवंतराव होलकर को मिले, इस बात की उन्होंने अरेंजमेंट कर दी। और यशवंतराव होलकर ने जब ये लेटर पढ़ा, ही वाज इन अ मूड टू कोऑपरेट विद सिंधिया, बट वो उसको एक झटका सा लगा कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, एंड दिस पीपल आर जस्ट यूजिंग मी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर दैट दे विल फाइट अगेंस्ट मी। एंड ही उन्हें उसको काफी गुस्सा आया, काफी नाराज हो गया। Angered यशवंतराव होलकर, he left this Maharashtra, he went to north, और नॉर्थ में जाके उसने सिंधिया के एरिया में ही लूटा-लूट करना शुरू कर दी। ये जो एक्ट था होलकर का, ये दिस हैज प्रूव्ड वेरी डिजास्टरस। मराठों की जो यूनिटी थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद में सिंधे और भोसले, इन्होंने जरूर अपनी फौज इकट्ठा लाने की कोशिश की, एक साथ लाने की कोशिश की। और ब्रिटिशों को तो केवल अभी बहाना चाहिए था, वो लड़ाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। मिलिटरीली they were quite strong and they were in a better position. तो जैसे ही मराठों की आर्मी एक साथ आने लगी, उन्होंने कहा कि यू आर ऑर्गेनाइजिंग आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द निजाम के बॉर्डर पे आर्मी एक साथ आ गई थी। एंड देन निजाम इज अवर फ्रेंड, इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट निजाम, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। एंड द ब्रिटिशर्स दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द मराठास। लॉर्ड वेलेस्ली ने काफी प्रिपरेशन कर रखा था। ये उनकी तो अपनी आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके साथ साथ में दे हैड सब्सिडारी आर्मी एट द डिफरेंट प्लेसेस लाइक मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, अवध, एंड ऑल दैट सब्सिडारी आर्मी दे कुड नाउ यूज अगेंस्ट द मराठास। सो जैसे ही वॉर शुरू हो गया, हम लोग देखते कि एक के बाद एक ब्रिटिशों की विक्ट्रीज हो गई। साउथ में ऑर्थर वेलिस्ले ब्रिटिशों के कमांडर थे और नॉर्थ में जनरल लेक थे। अहमदनगर जो कि सिंधिया के पास में था, अहमदनगर को ब्रिटिशों ने 1803 में कैप्चर कर लिया। सिंधिया और भोसले की जो कंबाइन आर्मी थी उसको उन्होंने हरा दिया। दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ असाई नियर जालना। जालना के पास में सितंबर 1803 में असाई की लड़ाई हो गई और वहां पर ये कंबाइन आर्मी ऑफ भोसले एंड सिंधिया वाज डिफीटेड। स्टीवनसन जो ब्रिटिश कमांडर था, ही कैप्चर्ड बुरहानपुर। द फोर्ट ऑफ असीरगढ़ वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एंड उसके बाद में
आडेगांव का जो लड़ाई हुई 2 महीने बाद में दिसंबर 1803, वहां पर भोसले की आर्मी वाज अगेन डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। गौरीगढ़ का जो फोर्ट है अमरावती के पास में, जो कि ब्रिटिशों का इंपॉर्टेंट फोर्ट था उस समय, फोर्ट का इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत था, दैट फोर्ट वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। एंड फाइनली जब इतने पास में ब्रिटिश आर्मी आ गई अमरावती के पास में, and they have captured the fort of Gauligarh, Bhoslas were defeated. Now Bhosles feared that after that the Britishers may attack their own capital, that is Nagpur. So they opened a negotiation, and after this negotiation, a treaty of Devgaon was signed between Bhosles of Nagpur and the Britishers, and that was signed on 25th December 1803. And after this treaty, the Bhosles they withdraw from the war, and according to this treaty, बहुत important gain जो ब्रिटिशों को मिला वो था ओडिशा का जो कटक का एरिया था वो ब्रिटिशों को मिल गया। एंड वो एरिया मिलने से क्या हो गया, बंगाल में जो ब्रिटिशों का एरिया था और साउथ में जो ब्रिटिशों का एरिया था ये आपस में कनेक्टेड हो गया। एंड इट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर द भोसले, बट एज दे वर डिफीटेड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। द वराड रीजन नियर वर्धा रिवर विल बी गिवन टू निजाम। The Bhoslas will accept the treaties that is signed by the British with other power. तो अभी ट्रीटी ऑफ बेसिन भी भोसले को स्वीकार करनी पड़ी। ब्रिटिशों ने जो और अलग अलग पावर के साथ में जो ट्रीटी साइन की है, ऑल दैट भोसले हैज टू एक्सेप्ट, एंड द भोसलेस विल नॉट कीप, will not entertain or will not have any agreement with anybody who is an enemy of the Britishers. तो ये भोसले का चैप्टर यहाँ जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है वहां पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में लेट अस कम टू सिंधिया। द वॉर्स वर fought simultaneously. Please remember, it is not that कि उन्होंने भोसले को पहले हराया और बाद में सिंधिया के साथ में लड़ाई की। War was fought simultaneously at the different places. सिंधिया की एक वीकनेस ये हो गई कि सिंधिया के आर्मी में कई यूरोपियन थे, स्पेशली फ्रेंच लोग थे, एंड दिस फ्रेंच वेयर केप्ड बाय सिंधिया टू ट्रेन द सिंधिया आर्मी ऑन द मॉडर्न लाइन। उनको परेड सिखाना, मॉडर्न आर्म का इस्तेमाल सिखाना, आर्टिलरी का यूज सिखाना, ये सारे कामों के लिए सिंधिया ने फ्रेंच लोगों को अपने नौकरी में रखा था। बट दिस फ्रेंच पीपल दे हैव जॉइन हैंड्स विद द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश उनको पैसे देते थे और उनको खरीद लेते थे। तो वन आफ्टर अनदर वी सी दैट देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड पेरन एंड देन बोरिंग क्वीन। All these two people who were important French commander in the Sindhia army, they did not fight the way they should. They left the battlefield at the crucial time, or they remain neutral, and that has led to the series of defeat of Sindhia in the northern India. We find that in 1803, the British general he captured Aligarh. Then immediately after that, Delhi was captured by the Britishers, and Badshah Shah Alam, who was under the protection of Sindhia at Delhi, he was taken into custody. Agra was also captured, and then important battle was fought at Laswadi near Alwar. And here, though the Sindhia army they fought very bravely, the Britishers had better artillery, and then Sindhias were decisively defeated. And as the Bhosles they already entered into agreement, Sindhia after defeat they did not see any hope, and they also entered into agreement on 13th December 1803 at Anjangaon Surji. So we see that on 31st December 1802. The Treaty of Basin was signed by Bajirao II, and after that, during 1 year, all these events took place. The opposition of the Maratha Sardar, and the joining of the army, and the war at the different places, defeat of Bhosle, and now defeat of Sindhia, and signing of the Treaty of Anjangaon Surji between Sindhia and the Britishers. So according to this treaty, Sindhia will hand over their area in the Ganga Yamuna Doab, including Delhi and Agra, to British. So huge area came in the hands of the Britishers. The Britishers will also get some area in Bundelkhand, few district of Gujarat, fort of Ahmednagar, an area of Ajanta to Godavari. The Sindhia will have to leave their control over the Mughal emperor now. The Mughal emperor now became an imprisoner of the British. Sindhia will acknowledge that Peshwa, Nizam, and Gaikwad they are independent power, and whatever agreement that is signed between the Britishers and those power will be acceptable to Sindhia. Sindhia will not keep any French, American, or any enemy of the Britishers in their service. And the Britishers they also tried to pressurize Sindhia to accept a subsidiary alliance, but Daulat Rao he refused. And later on, the fort of Burhanpur and Asirgarh, which was captured by the Britishers, they handed it over to the Sindhia.
And now, so two important powers were defeated by the Britishers. That is Bhosles of Nagpur and Scindias of Gwalior. But the war with Holkar, it continues for some more time. So as these two powers were defeated, the Britishers, they opened negotiation with Holkar, and Holkar, he was moving in the northern India and trying to form an united front against the Britishers. He also tried to collect Chauth from Rajasthan, and these rulers of Rajasthan, they had signed subsidiary alliance with the Britishers. So Britishers were under obligation to protect them. And the Holkar, he was moving from place to place, and the Britishers army, they were chasing him. Holkar, his movement was very swift, and it was very difficult for the Britishers to capture him. And a lot of skirmishes. The battles were fought between the Holkar's army and the British's army at different places. And in Malwa, on the bank of river Ban, the British General Monson was very decisively defeated by Holkar. And he also captures Mathura and then attacks Delhi. But if Delhi goes back again in the hands of the Marathas, in the hands of the Holkar, that would have been a loss of prestige to the British. So British sends huge army from Kanpur, and Delhi was saved. Now Holkar, he goes to Jat King of Bharatpur. The Jat King helps him. The war continues to be fought. People who were against the Britishers, they thought that it is Yashwantrao Holkar now who could release them from the clutches of the Britishers, and some of them, they did support him. The Maratha Sardar from Maharashtra, who were thinking that we can still support and fight against the Britishers. They joined hands with the Holkar, Yashwantrao Holkar, like Ambuji Ingle and Sarjarao Ghadge. And now again, once more, Holkar had made an attempt to find to make a unified front against the Britishers. So they had a meeting at Salabgarh in 1805, and at Salabgarh, Holkar and Scindias and other Maratha Sardars, they came together, or their representative came together. But the Holkar and Scindias, they could not resolve their differences. The meeting was not very successful, and as Holkar was moving from place to place, the Britishers were also quite tired now. They were experiencing that this war against the Marathas and against Holkar now, who is moving very swiftly, and it is very difficult to chase him, is proving as a kind of drain on the British treasury of East India Company. So Wellesley, who was quite an imperialist, was called back, and Cornwallis was appointed as a Governor General. And they were in a mood to reconciliation. The Britishers, they threatened India, and now Scindia also withdraws from Holkar. He stopped supporting Holkar, and Yashwantrao Holkar was now quite alone. He even went as far as to Punjab. The ruler of Sikh Lahore Darbar, that is Maharaja Ranjit Singh, he had meeting with Maharaja Ranjit Singh and requested him to help him against the Britishers. But Maharaja Ranjit Singh, he thought that I cannot take on the very well organized and well recruited army of the Britishers. And Maratha on their own side were quite ambitious. So he gave him respect, but he did not participate in the war, and neither the other Sikh ruler. And this was quite a disappointment to Yashwantrao Holkar. All other two important Maratha Sardar, they have already surrendered. Bajirao has in 1802 December itself had signed away his own independence, and finally he opened negotiation with the Britishers, and a Treaty of Rajghat was signed between Yashwantrao Holkar and the Britishers. That was signed on 24 December 1805. So we see that 1803 December that Scindia surrendered, but near about 2 years, this lonely person was moving around with his army and fighting against the Britishers. And but according to this Treaty of Rajghat, Yashwantrao was forced to cede area, that is north and west of Chambal, but he still had significant area, and he was still willing to fight against the Britishers. And he understood that he doesn't have a good artillery. That was one of the important reason of the defeat of the Marathas. So he comes back, and in 1809 he starts factory of cannon at Banpura, and he worked very hard along with the people. And it is said that it is because of the heat in that factory that has affected his head. He started losing his head. He became insane. And this unfortunate person, very brave, but Peshwa, the leader of the Maratha Confederation, could not make a proper use of this brave person. He died unfortunately in 1811. So, what were the causes of the defeat of the Marathas? Very obvious is that lack of unity,
they did not had an effective leadership. Bajirao too was not very effective, not very capable. The British army was definitely better trained and led by better commanders. The Maratha, they left their traditional guerrilla warfare and they fought in plain. And in plain, artillery proves to be very superior. It can create havoc. आर्टिलरी जो गन होती है, आर्टिलरी जो तोहफे होती है, वो काफी सक्सेसफुल होती है, जो कि ब्रिटिशों के पास में ज्यादा अच्छी थी. सिंधिया के आर्मी में जो फ्रेंच ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी सिंधिया के विश्वास को तोड़ा, उन्होंने ब्रिटिशों के साथ में हाथ मिलाया. और अब अगर हम देखते हैं कि ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो था, ये काफी डिसीजिव था. इससे हमें अभी हम लोग ब्रिटिशों को क्या क्या मिला, अभी आपको देखिए सीक्वेंस एक शॉर्टली मैं रिपीट कर देता हूँ. Treaty of Basin signed by बाजीराव पेशवा on 31 दिसंबर 1802. और उसके पीछे के कारण ये थे कि होलकर ने सिंधिया और बाजीराव पेशवा को डिफीट कर दिया था एंड बाजीराव रैन अवे टू द ब्रिटिशर्स. ये लेकिन ट्रीटी को मानने से बाकी मराठा सरदारों ने इनकार कर दिया एंड दैट बेसिकली लेड टू दिस वॉर. और इस वॉर में भी भोसले को पहले हराया गया 1803 के अंत में. सिंधिया वाज आल्सो डिफीटेड ऑलमोस्ट द सेम टाइम, बट यशवंतराव होलकर ही कंटिन्यू टू फाइट अप टू 1805 तक उसने अपनी लड़ाई जारी रखी. नाउ ये जो ट्रीटी, ये जो लड़ाई हुई, इसके अंत में ब्रिटिशों को क्या गेन मिला. देवगांव की जो ट्रीटी थी, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी ब्रिटिश द भोसलेस दे एग्रीड टू कीप ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर कैपिटल. ब्रिटिश रेसिडेंट, उसका ऑफिस वहां रहने लगा. ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री होती थी ब्रिटिशों की. उसके बाद में फिर वो आगे आगे बढ़ते थे स्टेप बाय स्टेप. Bhosles they agreed that they will not keep anybody in the service who is hostile to the Britishers. Bhosles they gave up their any claim on Nizam. कटक का एरिया जो ब्रिटिशों को मिल गया, उसका काफी फायदा हुआ क्योंकि अभी बंगाल और साउथ इंडिया, ये ब्रिटिश टेरिटरी जो थी, ये आपस में कनेक्ट हो गई. भोसलास दे ऑफ कोर्स डिड नॉट एग्री टू कीप सब्सिडरी आर्मी, लेकिन जब ब्रिटिश रेसिडेंट रहने लगा तो धीरे धीरे सब्सिडरी आर्मी आएगी. ये नेक्स्ट स्टेप ब्रिटिशों का प्लान था. अंजनगांव सुरजी का जो एग्रीमेंट सिंधिया के साथ में हुआ था, उससे ब्रिटिशों को दे गॉट वेरी फर्टाइल एरिया ऑफ गंगा जमुना एरिया. गुजरात में उनको काफी एरिया मिला. जयपुर जोधपुर के ऊपर उनका अधिकार स्थापित हो गया. Sindhiyas also agreed that they will not keep anybody in their service who is hostile to the Britishers. British ambassador they agreed to keep, and you know the Sindhiyas they compelled to leave all their rights for Rajput, and Sindhiyas and Bhosle they were compelled to give their consent to the Treaty of Basin that is signed by Peshwa, जो कि वो पहले agree नहीं थे. And now here onwards we see that the large area came in the hands of the British hand, and now they are left with no important power who could challenge them, and the Britishers they virtually became the ruler of northern India. Well, now ये जो second जो पहली लड़ाई में तो मराठों की जीत हो गई थी, सेकंड लड़ाई में ब्रिटिशों की जीत हो गई. देयर डोमिनेशन, देयर कंट्रोल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन लास्ट अटेम्प्ट जो मराठों ने किया ब्रिटिशों के चंगुल से छूटने का, वो दैट लेड टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1817 टू 1818. जस्ट अ मिनट. आपकी कोई क्लास है क्या अभी 12:30 बजे? डू यू हैव एनी क्लास एट 12:30? वेल, अभी ये जो सर्कमस्टेंसेस थे जो कि यू नो देखिए 1805 में करीब करीब ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो गया था, और उसके करीब करीब 12 साल बाद में ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ. तो ये 12 साल के बीच में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स केवल अपना रेसिडेंस रख के या अपनी सब्सिडरी आर्मी रख के दे वर ऑफ कोर्स नॉट सेटिस्फाइड. They were always looking for an opportunity to extend their power, to extend their control over the Indian kings. भारतीय राजा महाराजा के ऊपर अपना नियंत्रण और बढ़ाने की हमेशा उनकी कोशिश रहती थी, और उसी के कारण ये संघर्ष हुआ. देखिए बाजीराव पेशवा ने ये ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन कर दी, उस समय उसके मन में ये नहीं आया था कि मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी. उसको लगा ब्रिटिश मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं उनको कुछ एरिया दे दूंगा और फिर उनकी सहायता लेके आई विल हैव कंट्रोल ओवर द मराठा सरदार. लेकिन ये बात हो नहीं पाई. ब्रिटिश काफी क्लेवर थे, काफी कनिंग थे, एंड अभी पेशवा को फिर महसूस होने लगा कि मेरे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा है ब्रिटिशों ने,
वो काफी अनकंफर्टेबल है. नाउ आई शुड ट्राई टू गैदर द स्ट्रेंथ एंड थ्रो अवे द ब्रिटिश योक. एंड ब्रिटिशों को भी अपने तरीके से पता चला था कि जब तक ये पेशवा को हम लोग नहीं हटाते थे तब तक मराठों की सुप्रीम पावर समाप्त नहीं होगी. बाजीराव पेशवा जो था ही वॉज नॉट अ गुड रूलर, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं. तो उसने क्या किया, अपनी पावर अपना एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए टू टू इंक्रीज देयर हिज ओन सोर्स ऑफ मनी, जो छोटे छोटे जागीरदार और जमींदार थे पुणे के आसपास में, जैसे कि पानसे, पुरंदरे, पटवर्धन, इनकी जमीनें को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया. और फिर उसके कारण उसका इन लोगों के साथ में, जागीरदारों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. तो जागीरदारों को सप्रेस करने के लिए बाजीराव ने कहा ब्रिटिशों से कि मैं जो आपकी सब्सिडारी आर्मी आपने रखी है मेरी प्रोटेक्शन के लिए, आई विल यूज दैट आर्मी. बट द ब्रिटिशर्स दे रिफ्यूज इट. दे से कि नो, दैट यू कैन नॉट यूज अगेंस्ट जागीरदार, सो लेट अस हैव एन नेगोशिएशन. तो जागीरदार, ब्रिटिश और बाजीराव, इनके बीच में नेगोशिएशन हो गया. और ऑब्वियसली जहां पर भी चांस मिलता था, ब्रिटिश पेशवा की पावर कम करने की कोशिश करते थे और अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते थे. अभी इस नेगोशिएशन से क्या हो गया, एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1817 में 1812 सॉरी 1812 में पेशवा को साइन करनी पड़ी, पेशवा को जबरदस्ती की गई. और इस ट्रीटी में क्या था, इस एग्रीमेंट में क्या था कि जागीरदार जो थे दे नाउ हैव अ राइट टू एंटर इनटू सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश. ब्रिटिशों के साथ में अलग से जागीरदार कोई एग्रीमेंट कर सकते थे. तो पेशवा का जो ओवरऑल कंट्रोल था मराठा जागीरदारों के पास में, वो खत्म कर दिया गया. और दूसरा क्लॉज ये था, कई सारे क्लॉजेस थे, दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस मैं बताता हूँ जो विच वाज बिकम अ मेन इंपॉर्टेंट रीजन दैट दैट अनॉयड बाजीराव को इरिटेट करने वाले दो इंपॉर्टेंट कारण थे. और दूसरा क्लॉज ये था कि बाजीराव पेशवा और जागीरदारों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिजॉल्व थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशों की मध्यस्थता से वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए. और ये जो था, बाजीराव को लगा कि दिस इज काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर. दूसरी घटना जो हुई जिसके कारण ब्रिटिशों के और बाजीराव के बीच में के संबंध और खराब हो गए, वो था मर्डर ऑफ गंगाधर शास्त्री. ये गंगाधर शास्त्री कौन थे, आपको याद होगा मैंने बड़ौदा के जो राजा थे गायकवाड़, उनका उल्लेख किया था. तो एक ट्रेडिशनली बहुत सालों से एक एक सिस्टम पेशवा और गायकवाड़ के बीच में बनी थी कि गायकवाड़ को हर साल 24 लाख पेशवा को देने होते थे खंडनी के रूप में. गायकवाड़ यूज्ड टू पे 24 लाख रुपीस एवरी ईयर टू पेशवा. लेकिन इस बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला था, अनसर्टेनिटी थी, उसमें कई सालों से उन्होंने पैसे पे नहीं किए थे. और ये हमेशा ही होता था, जो मराठा सरदार होते थे वो पेशवा को पैसा पे करने से थोड़ा सा डिले करते थे या फिर कम करते थे. फिर निगोशिएशन होता था, कहीं पर सेटलमेंट होता था. देयर वाज दिस काइंड ऑफ ऑलवेज इंटरनल टेंशन बिटवीन द मराठा एम्पायर. और वो यहाँ पर भी था. गायकवाड़ के तरफ काफी सालों से पैसा गायकवाड़ से पेशवा को नहीं मिला था. और इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए गायकवाड़ की तरफ से एक गंगाधर शास्त्री नाम के व्यक्ति को बड़ौदा से पुणे भेजा गया. ब्रिटिशर्स, ये गंगाधर शास्त्री ने पहले ब्रिटिशों के यहाँ नौकरी की थी, अभी वो गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करता था. ब्रिटिशों ने उनको एश्योरेंस दिया कि गंगाधर शास्त्री के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम लेते, उसको कुछ नहीं होगा, आप भेजिए. जब गंगाधर शास्त्री पुणे में आया, बाजीराव वाज नॉट वेरी सीरियस इन नेगोशिएशन. ही वाज बाइंग द टाइम. गंगाधर शास्त्री को रिस्पेक्ट भी नहीं दिया गया और वहां पर उसका काफी समय चला गया. 1 साल से वो ज्यादा वहां पर रहा. बाद में दिस वाज नॉट लाइक बाय द ब्रिटिशर्स एज वेल. अभी एक समय क्या हुआ, पंढरपुर जो कि मराठी महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ क्षेत्र है जहां पर लोग पूजा करने जाते हैं. तो वहां पर पंढरपुर की यात्रा की और वहां पर ये बाजीराव पेशवा अपने साथ में इस गंगाधर शास्त्री को भी लेके चला गया. और उसमें एक व्यक्ति था जो बाजीराव पेशवा का खास व्यक्ति था, वो था त्र्यंबक जी ढेंगड़े. अब यहाँ पर पंढरपुर में जो लोग रुके थे, तो एक दिन इस गंगाधर शास्त्री को त्र्यंबक जी ढेंगड़े ने कहा कि चलिए हम लोग दर्शन करके आते हैं सवेरे. और जब वो मंदिर में दर्शन के लिए गए, मंदिर से जब वापस आए, तो वहां पर कुछ लोगों ने गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया. अब किसने की निश्चित रूप से पता नहीं था, लेकिन उसके तुरंत बाद में बाजीराव जो कि पंढरपुर में थे और त्र्यंबक जी ढेंगड़े भी जो थे, वो पंढरपुर से तुरंत पुणे में आ गए. दे हैव टेकन एडिक्वेट प्रिकॉशन ऑफ देयर सिक्योरिटी. लेकिन ब्रिटिशों को ये लगा कि इट इज त्र्यंबक जी ढेंगड़े who is the main conspirator
who is mainly responsible for the murder of Gangadhar Shastri. And he is supported by Bajirao Peshwa. Bajirao ने भी उसको support किया होगा. तो उन्होंने अपना investigation किया and then he requested Bajirao कि you should surrender this Trambakji Dangre to us. He is a person who is responsible for the murder of Gangadhar Shastri और गंगाधर शास्त्री की लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी थी. बाजीराव ने उसको सरेंडर करने से मना कर दिया, तो फिर संघर्ष दोनों में और बढ़ गया. Finally, Trambakji Dangre was arrested by the Britishers and he was kept in one jail. लेकिन त्र्यंबकजी डेंगड़े वहां से भाग गया. ये भी दिस वाज सपोर्टेड बाय बाजीराव पेशवा, क्योंकि त्र्यंबकजी डेंगड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मतलब उसके ऊपर गार्ड करने के लिए जो सिपाही ब्रिटिशों ने रखे थे उसमें से किसी को भी मराठी नहीं आती थी. एंड बाजीराव सेंड हिज मैसेंजर थ्रू मराठी, मराठी पोवाड़े, मराठी सॉन्ग लोग गाने लगे उसके जहां पर उसको रखा गया था. एंड थ्रू दैट सॉन्ग ही गॉट द मैसेज. ही टुक अ हिंट एंड वन डे सीइंग अ चांस he jumped from the very high prison cell, mounted a horse and he ran away. Now this running away of Trambakji Dangre, it created a stir in Maharashtra. Now they start, people in Maharashtra, they started composing song and they started thinking that he is a hero who is now fighting against the Britishers. Britishers were obviously disliked by the Maharashtrian people. But this has proved to be temporary. It did not have much effect practically. And now during this time, Peshwa was desperately trying to form an union of the Indian ruler against the Britishers. He was sending his ambassadors to the different places. और ब्रिटिशों को जब ये बात पता चली, त्र्यंबकजी डेंगड़े को लेकर भी उनके रिलेशन खराब हो चुके थे, they compelled Peshwa to sign a new agreement in 1817. And by this agreement, there are certain clauses which I will tell you. Trambakji was declared as a murderer. Bajirao will not have any right over Maratha Sardar as Peshwa. Bajirao lost all the territories outside Maharashtra to Britishers. He will not send his representative to any other ruler, and he will not be allowed to have any correspondence with other ruler. जब उसके correspondence वो नहीं कर सकता, किसी के पास में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकता, so this was too much for Bajirao. He felt suffocated. But he was compelled to sign because he had no other way. क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन करने के लिए ब्रिटिश भेजते थे, वो अपनी सेना तैयार रखते थे, और बाजीराव के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी, उसकी सेना भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि दैट ही कुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो वो कोशिश साइन जरूर उसने कर दी, बट उसने भी अपनी पॉलिसी शुरू रखी. और ब्रिटिश ये जानते थे कि बाजीराव मीठी मीठी बातें तो बोलता है ब्रिटिशों के साथ में, but he is now preparing for the war against the Britishers, and that he was actually doing. He was communicating with the Bhosles of Nagpur, and this pressure from the British side had finally resulted in the war. So in the war, what happened is, Bajirao was desperate to throw away the yoke. He made Bapu Bhosle as commander, gave him 1 crore rupees so that he can organize the army. He organized army. He had correspondence with the different ruler. जागीरदार जिनके साथ में बाजीराव का संघर्ष था, उन जागीरदार की जमीन बाजीराव को वापस दे दी गई. And Britishers from their side also, they prepared for the war. And the meeting, मराठा सरदारों की मीटिंग हुई. And after that meeting में भी कुछ conflict थी. There were certain sardar who were not really willing to attack the Britishers right now. They thought that we need more time for the preparation. There were some sardar who were willing to attack right now. Bapu Gokhale, the Senapati, was willing to attack, and then the Peshwa's army under the leadership of Bapu Gokhale, they attacked the British residence. Britishers officers, they ran away, and that residency was captured. It was burned. All the book of Elphinstone were also burned by the Marathas. And this event took place on 5th November 1817. And after that, the Maratha army, they marched towards Khadki. Khadki was the important British cantonment. वहाँ पर British cantonment था. And this battle was fought on 16 November, which is known as Battle of Khadki. It is also known as Battle of Ganesh Khind. It is also known as Battle of Erode. And Marathas, they attacked cantonment. But in this battle, the Marathas, the Britishers, they fought very valiantly, and the Marathas were defeated. Peshwa, who was seeing the battle, as he ran away when the Holkar defeated Scindia's and Peshwa's army, as he ran away to Purandar, now also when he saw that Maratha army is being defeated, he ran away to Purandar, and Pune fell in the hands of the Britishers. So on 17 November 1817, Union Jack was unfurled at Shaniwarwada, the residence of Peshwa.
Bajirao, though he escaped from this battle, he continued to put up resistance for next 6-7 months. Like, there was a battle of Koregaon, which was fought on 6 January 1818. Here also Peshwa was defeated, and as he saw he is being defeated, he runs away. Then next battle was fought on 19 February 1818, Battle of Ashta. Here, unfortunately, Bapu Gokhale, the brave commander of Peshwa's army, was killed, and Chhatrapati of Satara, who was accompanying Bajirao Peshwa, he fell in the hands of the Britishers. Now, Britishers made a good use of him for their own advantage. Bajirao ran away, and from the Bajirao camp, the Britishers got a wealth of near about 1 crore rupees. Now, as Bajirao was running from place to place, Elphinstone, the British resident at Pune, he made certain proclamation. He said that now Peshwas, they had appropriated the rule of Chhatrapati. Chhatrapatis are the real ruler of the Marathas, and Chhatrapati's rule over Satara and surrounding area will continue. We will support him, we will protect him. People should not pay any tax to Bajirao, and they should not serve under him. Now, as the situation was very bad for Bajirao, many people left Bajirao. Bajirao, he started towards Nagpur. But before he could reaches to Nagpur, he got the news that Nagpur, Appasaheb Bhosle, we will be talking about Appasaheb Bhosle a little later, but Appasaheb Bhosle, he fought against the Britishers in the Battle of Sitabardi, and he was defeated and arrested. Now, as Appasaheb Bhosle was defeated, there was no point in going to Nagpur, as Nagpur was not now completely occupied by the Britishers. So he goes back, he turns back, and he is again chased and defeated near Nahur by the Britishers. And later on, he goes to north, tries to take the help, but he tries to communicate with the ruler of the north, but he did not get much help from anybody. And finally, in June 1818, he surrenders to the Britishers. And by that agreement, he surrenders all the right of his family over Peshwa. He was given 8 lakh rupees pension, and he was sent away from Maharashtra, that is near Brahmavat near Kanpur, where he later on dies in 1851. And to respect the Maratha sentiment, the British create a small kingdom of Satara, which was ruled by the descendant of Shivaji. And now slowly, Britishers, they established their control over Bhoslas of Nagpur, Holkar, and Sindhia. Now, when all this event was taking place with Peshwa, Bhosles who were willing to support Peshwa, they also fought war against the Britishers. In 1818 itself, responding to the call of Peshwa, Appasaheb Bhosle, he attacked British resident, but he was defeated in the Battle of Sitabardi. And subsidiary army which was there in Nagpur already was used against Bhosle. Appasaheb Bhosle was first arrested, and but then when he was taken to northern side, he runs away from the custody. But after that, he did not play any important role. A small Nagpur kingdom was created, and a small young boy who was made a Bhosla king, and he has to rule by according to the wishes of the Britishers. And there is a battle simultaneously when the Britishers, they fought against Peshwa. They were fighting against Holkar as well. Holkar also responded to the call of Peshwa, and they sent huge army towards Pune. But that army was also defeated in 1817 itself. And Holkar, they were compelled to accept subsidiary alliance, and they have to give away large area by the Treaty of Mandsaur, which was signed on 6 January 1818. Scindia remained neutral in the war. They did not support Peshwa, but nevertheless, the restrictions on Scindia were also increased, and the Scindias were compelled to cede the area of Ajmer. What were the results? And summing up, just a few minutes more. The result, now the Marathas, during these 3 wars, the Marathas were decisively defeated, especially during the Second Anglo-Maratha War, and the Third Anglo-Maratha War had completely finished off the Maratha Empire altogether. And this has removed the main hurdle in the expansion of the expansionist policy of the Britishers. Now, except Sindh and Punjab, British had domination almost all over India. And if you have to sum up all these 3 battles, the disunity among the Marathas was the main cause of their defeat. The political structure of the Maratha Confederation was essentially weak. The Britishers were well equipped, and they were definitely diplomatically superior. They also had a well-trained army, and all this led to the defeat of the Marathas in the Second and Third Anglo-Maratha War. So, just quickly summing up this Third Anglo-Maratha War, that after the Second Anglo-Maratha War, which ended in 1805, there is a gap of 12 years.
And during these 12 years, a lot of things happened which had antagonized the Bajirao and British. ये 12 साल में कई सारी बातें हो गई जिसके कारण बाजीराव और ब्रिटिशों के रिलेशन और खराब होते चले गए। मर्डर ऑफ गंगाधर शास्त्री, जो जमींदार थे उनकी जमीन बाजीराव ने हथियाने की कोशिश की। और उसके बाद में 1817 में और दूसरी एग्रीमेंट ब्रिटिशों ने बाजीराव के ऊपर थोपी, एंड दैट वाज टू मच। बाजीराव ने सेना जमा करने की कोशिश की, बाकी मराठा सरदारों के साथ में अलायंस फॉर्म करने की कोशिश की, बट बाजीराव एंड ऑल दोज मराठा सरदार वेयर defeated separately by the Britishers, and the Maratha Empire became extinct in 1818 almost. और उसके बाद में जो सातारा को राज्य था मराठों का, वो बहुत छोटा सा था। It had and the king has to rule according to the wishes of the Britishers. So here today we have completed Anglo-Maratha wars. All three wars we have completed. And the next class we will be talking about the Anglo-Sikh war, and when the next class will be, I'll let you know about that. So if you have any doubt now, you can ask me.